Hello, this is Archangel speaking. We will start a new topic today. We have already studied the expression of possibilities and the use of must expressing in inference, obligation, and necessity, and their negative parts. Today, we shall learn the use of making a request. So, how to express, how to make a request. As such, we have known till date that shall will is used for using a future indefinite time. But you see, and can and may are used to express either ability or possibility. But you see, while expressing a request, we will have in the informal way will and can, where will is more informal and can is just informal, and in the formal way may and could and would are used. So right now I should say here that may is used for a rather formal case where we are not subject to be more formal, either informal, and could is used in the formal way, and when we will have to be more polite, would is used. Could means if you don't mind, can you? Would means if you don't mind, will you? This is the elaborative meaning of could and would while expressing a request in the formal way. So what is informal and what is formal? You see, there are three kinds of relationship we can establish. Number one is the stranger's relationship. Who is a stranger? To whom we see for the first time. Right? And we deal with them either in the more informal way, in accordance with the merit of our counterpart, or in a formal form. If the person is quite senior and we do not know him at all, we see him for the first time. Now come acquaintance. What is acquaintance? That we know them but not intimately, and we have just established a relationship that we do not want to be more intimate with him. There are some kind of relationship that we maintain. This is what is we can call it a professional relationship, where neither we are too formal nor informal. Understand? So this is what is acquaintance. And the most important form, that is, we are keeping a relationship around us very closely, that is familiar relationship, and we are quite informal. What is familiar? Where we are not concerned too much to what to speak, that is familiar. We are not concerned to whom you speak and to what to speak, because we know that he will never mind whatever we speak. That is that is familiar way of expression, right? So we have known the means of communication, that is informal and formal. Sometimes we are rather formal, meaning thereby we are not too formal, neither we are informal. You see, and what are the modals that is used here? You see, will, can, may, could,
would. Your book has not properly organized. That's why I have just arranged an order for this. For informal cases, will is used in a more informal way and can is used in an informal way. May is rather formal, expressing a request, and could is formal, and would is more polite. You see, whenever we make a request, can we make a request in a statement? No, it is interrogative. We ask or we make a request in the interrogative form. Understand? So you see, again I should say you one thing, that is, will you, can you. You see, whenever will is used, you should use, because whenever we request to somebody, he is the second person and we are the first person. But in a rather formal way, we should speak may I. Either could you or may I. This is formal, no doubt, but it is half formal. We can rather say it. So you see, so now we shall go one by one how to make a request. Another thing is that whenever we uh, make a request, we see the persons who he is. If he is close to us, you see, suppose you are here. This is familiar. This is acquaintance. And this is stranger. Gote letter likhi dଉଛି ହେଲା. This is acquaintance and this is familiar. So you see, when we are close to somebody, right, our sisters, our brothers, our parents, right, and their in-laws and our in-laws, so when we are quite familiar, and then acquaintance means we know them. You see, in a class we are not very much familiar with all. Some have acquaintance with us, आम सहित बेसी इंटिमेसी रखती आम केवल जानू सी आम क्लास रे पढ़ती. आउ किछि पिला अछंती जो मान सहित वी आर क्वाइट क्लोज, वी शेयर एवरीथिंग देयर and we never concern what to speak. That is what is familiar relationship. Whenever you make a request to them, you can use either will or can in accordance with the merit of your friend. And there are people whom we know but not intimately, and there are also people that we come across for the first time. They are strangers, and a stranger can be a derogatory person or can be a quite senior person, respected person. You see, suppose there is a gateman, should we use could, would? No, right? We cannot use, we just can you please open the door, or will you open the door? A rickshaw puller, a gateman, a watchman, they are even those strangers. We cannot be too formal, you know. Understand? So you see, so these are the relationship. Now we can go for one by one. Another thing is that whenever we deal with them, we should always see, the second most important is that we should always see that what is the intensity of our necessity. Why should you request him? Understand? So if you are quite needy of something, you are humble, even with your friends. Suppose it is a bicycle, you can say, can you lend me your bicycle, or will you lend me your bicycle, right? But if you demand a scooter from him, so could you, or may I get the key of the scooter? If you are acquainted, because your need money, the intensity of want is more.
आमर जो वांट इंटेंसिटी अधिक होगा ताले वी बिकम मोर पोलाइट राइट। तो आम कहीदे बो 5 टଙ୍କା दिलु मामा 5 टଙ୍କା देल तो 5-10 टଙ୍କା ये ठीक अच्छे right, you know that she will pay you 5 rupees, so it is also a kind of request but in a familiar way. But if it is 100 rupees, so definitely you will be more humble, your tone and temperament will become humble. बहु 100 टंका दरकार थिला लो मामा 100 टଙ୍କା दरकार अछि मामा देई थिबो तो राइट। So if it exceeds to 500 or 1000, so you will have to demand that from your father. So how should you demand it? बाबा 1000 टଙ୍କା अच्छे देला देबे की, so you will be there more humble. तो केते खोसामत करी 1000 टଙ୍କା ने मागियो 1000 टଙ୍କା ने बाबा पॉकेट रू खसेबा हाउ मच इट इज डिफिकल्ट हला। तो जहाँ कोई जहाँ इंटेंसिटी अधिका थी पचारे से जानी पार है। तो देख पे दिस इज व्हाट इज मेकिंग रिक्वेस्ट। तो आम गोटे गोटे मु जिन जाऊँगी बोले आई वांट गो मच यहाँ बहुत इजी जिनसा राइट। यू सी आई शुड वी शुड नो देम फ्रॉम द एक्सप्लेनेशंस एंड सिचुएशनल एविडेंसेस। तो मु तुम गोटे गोटे जिनस कहीदे बोले गोटे इनफॉर्मल वे रे राइट you need some money, ask a friend, to do, to lend you some, to lend you किसी टंका तुम तुम सांग को मागिल। तो दिस इज व्हाट इज ए सिचुएशनल एविडेंस। व्हाट शुड यू डिमांड, हाउ शुड यू डिमांड राइट। देखो either you can use will or can. You see these modals will, can, could, would, they all take second person for making a request because the first person makes a request to the second person है। तो will or can you lend me some money देइछि some money तो आमे केबे कहबानी 100 rupees right, there should be interrogative sign। देखो पहले will is more formal है माने where you don't find any difference between you and your friend। हमें एते इंटीमेट हो जाओ आम भितर कौन सी भावना रहे ना जड़े जन को कहला से जगह में विल यूज करूँ जो थी आम माँ को सहित व्यवहार कला आवर मदर इज आवर एवरीथिंग एंड व्हेन वी डिमांड समथिंग from our mother we are not formal, we believe that my mother will definitely give me, she will definitely deny, we are quite confident से जगह पे आम इनफॉर्मल हो जाओ है। तो कैन इज इनफॉर्मल है, इट इज मोर इनफॉर्मल, इट इज इनफॉर्मल। तो कैन यू लेंड मी 100 rupees बस गोटे गोटे आंसर खोज पे गोटे गोटे जिन कहे सब जिन दिस इज इनफॉर्मल। तापर आस पे you are carrying a heavy bag,
ask someone to open the door for you. So what is the situation? You are carrying a heavy bag. दुईटा हाथ में धरिच है तो you ask someone to open the door for you. So what should you say? Suppose you can use both informal and formal. Suppose he is your elder brother, or suppose he is a person who is stranger to you, or a gateman. Even though he knows you or you know him, you are not very much intimate with him. So से जगह में कौन करिया पहले you can do could you please formal could you please open the door. देख पहले या दुई प्रकार लिखा जाई परियो हैला तो आम जदि एटा could you please आनिले so could you it is because it is a request. ध्यान दियो पिले इंग्लिश रे आम व्यवहार को बहुत सम्मान दे था हमर ओडिया रे एते नाही हैला आम ओडिया रे मतलब भाई कलम डा टिके देला कलम डा नेलो थैंक यू कहला हैला पुणी एतले कलम डा फेरेला जे नेला से थैंक यू कहबो काहे तमे कोन देनो थांदो कि तमे देनो थांदो कि ना से भाभी थिला ना दबनी पराले दे देला तो थैंक यू तो देख पहले कथाटा हूँ से नुह कथाटा इंग्लिश रे मैनर उपर बहुत प्रायोरिटी दि जाए मैनर रु ही व्यक्तित्वर परिचय आम पाई था तेणुक आम ये कुड यू यूज करिया सहित सब आम प्लेस को यूज करिया. अच्छा जदि आम प्लेस को एपटे नहीं जा ताले केमती लेखा कुड यू देख पे कॉम्पिटिटिव परीक्षा रे सब आसीबो प्लीज सॉरी कुड यू comma right please. So there are two ways of writing this sentence, right? Either you can write could you please open the door, or you may write could you open the door comma please, right? So you cannot just omit the punctuation mark here if also you say, right? You should remember this. Now you come गोटे सेमी फॉर्मल को जीवा चलो पोलाइट कहली गोटे सेमी फॉर्मल वे को जीवा चलो मु गोटे गोटे कहूँ पिले in the offline class only we will just go in detail of every question and he will say that you practice now and he will when you come to the offline class we will have discussion with the questions in detail, right? So you see, let us come to a semi formal one. So you want your room key, you want your room key from the receptionist, from the receptionist in a hotel. Ask the receptionist to give you the key. Ask receptionist to give the key. हला तो कौन करियो बेले देखो बेले एठी गोटे जिंस देखो मेन कथा हो you will have to
Use your intellect. Suppose she is a lady. Suppose she is a lady sitting as a receptionist in the hotel counter. You cannot be even semi-formal, right? So if you are a male member, you should always have respect for the women in general. What should you say? Thereby, you can say could. Or if the manager is a senior person, you see, देखो पहले कौन सी जिनिस एमती किसी ना जे एटा ही हबो, किंतु we always see the counterpart who is there. If he is a senior person, pretty senior to us, and where his status lies, if he is a lady, definitely she will ever be respected. We cannot be informal or say semi-formal if you do not know him. इठी जगह आम तीन टा केस मुझे नोच पिले. Suppose the receptionist is a lady, so could you please provide me the key or get me the key? Suppose you are a regular visitor to the hotel and you know the manager but not very intimately, and he is of your equal age. You see, I am just giving you the situations. The books will never provide them. Suppose he is almost of your equal age. You can say, may I get the key? Do not use please, may. But whenever may is used for making a request, you should always use the first person here. Understand? Could you or may I? Suppose the hotel owner is sitting. Sometimes also we see that the receptionist is absent or the manager is yet to come. The hotel owner might sit there. So you will have to be polite. He could be a senior person, right? तो देख पे ओवराली सीनियर पर्सन जदि है तमे मे यूज करनी पे लेडी जदि रही तमे मे यूज करनी किंतु जदि इक्वल फुटिंग रे तमर अछि इक्वल ऑफ एज ताले तमे मे आई यूज करि पारियो. दिस इज व्हाट इज सेमी फॉर्मल. मु सही जिंस रे कहूची जे मे I get the key of my room भी लिख पारा of my room नाले may I get the room key हला जहाँ भी लिख पारा and you should give a even interrogative mark. अच्छा नेक्स्ट आ गोटे देख पे लिखुचे यूआर. अच्छा यू आर ऑन द फोन. आ गोटे सिचुएशन देली पिले यू आर ऑन द फोन. You want to speak to the chairman. You want to speak to the chairman. कौन करियो पिले यू आर ऑन द फोन. तुम फोन रे अछो तुम चेयरमैन के सहित कथबार्ता करा चाहछो हला. ताले आमे एठी पिले ओडिया रे आमे कोन कहउछे हेलो प्रिंसिपल अछंती कि प्रिंसिपल को आमे पचारछ हां कहउची माने इट इज ए वेरी इंडिसेंट फॉर्म right of expressing a very indecent expression. So हमें कौन कहया हमें जानते प्रिंसिपल करो मोबाइल बा चेयरमैन करो मोबाइल बा फोन तांको पाखे रहउची तो हमें कौन कहया मे आई टॉक टू द चेयरमैन. मे आई टॉक टू द चेयरमैन आइदर तांको पाखे जे थिबे से जदी फोन धरथिबे ताले से पचारि पारती आपण किए कहउछंती एवं से फोन टा दे पारती पीबीएक्स थाई पारे
जो थी से फोन टाको कनेक्ट करेंगे किंतु आम कहबानी जे इज इट चेयरमैन स्पीकिंग वी कैन नॉट से दिस इज इनफॉर्मल वे तो आम कहवा मे आई टॉक टू द मो प्रिंसिपल सहित टे कथा पारि कि येस स्पीकिंग विथ प्रिंसिपल कहि पारंती तो इसी ये कौन करिवो मे आई टॉक टू द चेयरमैन हाँ प्लीज करियो प्ले कुड उड पाखे प्लीज हम राइट तो देख है यू जस्ट रिमेम्बर देम नेक्स्ट आस पे आम कुड उड को चली जा मुझे बर्तमान तीन टा कहली इनफॉर्मल एंड सेमी फॉर्मल एंड फॉर्मल गोटे कहली राइट बर्तमान आस पे यू आर ऑन ए ट्रेन you would like to borrow a newspaper ध्यान दिए पहले it costs only 4 rupees you can also purchase that but you did not do that rather you want to beg that from another person normally it so happen हाँ सी तो पढ़ले से पढ़ला पर 10 मिनट पर सोई पड़ो मागिदेवी so this is Indian tendency so what should you how do you demand because you see you have to be more polite here that कौन करियो पहले तो formal way भी एटा हबनी because you have the capability of purchasing a paper with just 4 rupees or just 5 rupees so but you did not think to purchase that you want to beg so how should you beg मांगियो केमती तो देखो you are on a train अच्छा definitely he is a stranger whoever he may be he cannot be the watchman neither he is a sweeper so definitely he is a gentleman and he is a stranger you see him or you meet him for the first time how should you demand would you please be kind you have to be more polite here or would you please or would you mind भी कर पारिबो would you please न करी would you mind करा would you mind giving me the newspaper for a while आम कौन कह पे आज्ञा पेपर टे देवे कि कौ साइड रू नब पेपर टे देवे कि माने कौ थी नब खंडे टुकुराटे तो कहया कथा हूँ किसी समय पर देवे कि है तो देख पे से आम कहले फॉर ए व्हाइल से फ्रिज राइट तो वुड यू माइंड देखो वुड यू माइंड जो लिखा है पे मुझे कहीदे इफ यू यार अर्थ कौन आम माइंड रे चलुच ऑलरेडी कही पे जे मोडल्स एक्सप्रेस एटीट्यूड ऑफ थॉट तो माइंड रे कौन चलुची वी एक्सप्रेस दैट है तो इफ यू डोंट माइंड वी लिव देखो एतक जिनिस आमे आनिले वुड यू माइंड आहरी यारी ऊपर भी पे पोलाइट फॉर्म अच्छी राइट पोलाइट फॉर्म ऑफ रिक्वेस्ट यारी ऊपर भी अच्छी आई वाज वंडरिंग इफ तुमको से पढ़ौनी किंतु तुम हायर ग्रेड को गले से गुड़ा सब पढ़ आई वाज वंडरिंग इफ यू प्लीज बी काइंड टू
बोरो योर न्यूज पेपर देख पे ये सबुठ पोलाइट फॉर्म कि मुझे तुमको सेगुड़ा पढ़ौनी है तो तो ट्रेडिशनल ओडिया जान पे ट्रेडिशनल ओडिया कौन हुए कहला आपण चरण पड़ा आम्भे कृतार्थ हेलु तो ये बहुत हाईएस्ट लेवल ऑप्टिमल लेवल आम जोटा कह हाईएस्ट लेवल ऑफ रिक्वेस्ट राइट आपण पाद आम घर पड़ला आम कृतार्थ हो गलु ये सब जिनस युड़ा सब से सब वुड यू माइंड और वुड यू प्लीज बी काइंड इनफ और आई वाज वंडरिंग इफ यू कुड ये सब जिनस मुझे गुड़ा जाऊनी तो आम कम्युनिकेटिव रही कम्युनिकेटिव भितर रखी तुमको है तो जो जो जिनस दरकार मुझे तो ये कौन कल बेले आम आंसर कले ना वुड यू माइंड गिविंग मी द न्यूज पेपर फॉर ए वाइल तो बर्तमान देख पे मुझे तुमको कहली एक्सप्रेसिंग ए रिक्वेस्ट इन डिफरेंट यूजिंग डिफरेंट मोडाल्स बर्तमान देख पे सेकेंड मुझे जिन कहती इंटेंसिटी ऑफ वांट इन अकॉर्डेंस विथ द मेरिट ऑफ योर वांट जिते पे आम रखी था यू सी स्पेशली माने वी आर पोलाइट इन मेकिंग सम ऑफ द मोर अनयूजुअल रिक्वेस्ट बेले बेले आम अनयूजुअल रिक्वेस्ट करता बोले बट व्हाइल डूइंग सो वी शो द रीजन दैट इज मेड अनयूजुअल माने अनयूजुअल रिक्वेस्ट करता से देख पे आम जन को साइकिल मांगुचे तो सी दे दूसरी से नुआ गाड़ी टे सपोज आई एम जस्ट गिविंग यू योर एग्जांपल तुम बाबा को तुम मसे अली कल केते दिन खाइलनी केते दिन पीलनी एवं तुम बाबा लोन कले एवं एक्टिवाटे किणीदे इट इज ए फैक्ट इट हैपेंड ईयर बिफोर लास्ट ईयर इट हैपेंड गोटे पिला ट्यूशन आसिलानी घरे अली कला बापा लोनी थिले तथापि जीपीएफ रु टंका बाहर कर पिला को किणेले केमिस्ट्री रे फेल हो गला +2 फेल अंडरस्टैंड ना कहया चाहूनी एवरीबॉडी नोज हिम तो इसी बेले बेले आम आनी तो सही केस मुझे तुम बाबा तुमको गोटे नुआ एक्टिवा किणीदे एंड जमा जोड़े दिन होती सी एकदम निज रूमाल टर्किश काढ़ी बाहर करके 3 थर पोछुथो रास्तार बाटर घाटे धूली पड़ा होनी से जगार तुम ताको मागिदेव हाउ डू यू फील हाउ डज यू फील कौन से भाव यू कैन इमेजिन तुम प्रति रिलेशन काटिदेव नत मन खराब कर बट if you could show the reason why you make such an unusual request तुम पॉकेट रे 100 टंका अच्छी मु 100 टंका मागुची could you pay me never but still if you could show a solid reason मु जानी मो विवेक अच्छे तो पाखे जमा 100 टंका अच्छी तेबे मु मागुची तार कारण मते शो करिया पड़ो सो बिफोर मेकिंग एन अनयूजुअल रिक्वेस्ट you must show the reason that is made है तो एमती जगार पे आम देखु गोटे एग्जांपल टे नौचे दैट मनीषा इज इल इन बेड मनीषा असुस्थ अच्छी मु गोटे जोड़े करी पे बाकी सब क्लास रे करवा एंड हैज टू रिक्वेस्ट हर फ्रेंड टू डू थिंग्स फॉर हर तो देखो यूजुअल रिक्वेस्ट को किसी असुविधा नहीं मनीषा एंड हिज फ्रेंड वेर क्लोज फ्रेंड्स दे वेर राइट बट मनीषा इज इल असुस्थ कारण से किसी करने को सांग को चाहूँ तार हेल्प चाहूँ तो किसी यूजुअल रिक्वेस्ट रही किसी अनयूजुअल रिक्वेस्ट भी रही देखो यूजुअल रिक्वेस्ट में कहूँ मनीषा वांट्स सम बुक्स टू रीड शी वुड लाइक हर फ्रेंड टू गेट हर सम है फ्रॉम द नेक्स्ट रूम धरा जाओ ताले ये कौन करिया पिला में you see whenever we communicate we always use some spoken phrases देखो बोले तुम बही की बही टेस्ट पेपर स्पोकन फ्रेजेस दौनी whenever we talk to ourselves we use some will by the way
you know, so these are some of the spoken phrases we use in our communication. तो हम एठी कहले will, Manisha will, can you lend me some books from the next room? So it is an usual request. It is a usual request, and you can make this kind. ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ ପିଲେ, Manisha doesn't want to be disturbed by visitors. तो मनीषार देह खराब है ताको देखियाकू पळि आछन्ती समस्ते, एंड मनीषा डजंट वांट टू बी डिस्टर्ब्ड. से जदि देखे ताकू देखियाकू आछन्ती तो ताकू तो कहि परिबनि तमे एटी पार्टी करने, से माने आसिले एवं सेमान भितर गपी आरंभ कले, एंड मनीषा इज डिस्टर्ब्ड. तो मनीषा केमती करिवो, कहिवो केमती, हाउ शुड ही बी पोलाइट, सी बी पोलाइट, यू सी. Diverting their attention, he should say, she should say hello. Then, would you mind stop talking please? हला तो देखो मैं लिखी दूची, hello to diverting what, attention, one's attention. हला either hello or excuse me. You can also write excuse me. Excuse me माने you have to show a solid reason. Excuse me, would you mind stop talking please? देखो बोले ताको ओडिया रे में कहि परियानी, पार्टीटा बंद करनो कहले झीले खराब भावियो. हला मते विरक्त लागुचे, टे चुप रुह. ये भी जणो कहटा खराब, हाँ मते पार्टी चुप रह कहला, पार्टी बंद करियो मते कहला. तो एगुडा किंतु इंग्लिश रे पिला को कहा जाय परियो, वुड यू माइंड स्टॉप टॉकिंग प्लीज. टिके कथावार्ता न करथिले भलो ही थांता. दिस इज द indirect way of approaching, or this is also a kind of request that you can make. हला तो देखो आ गोटे जिनस कौच पिले, तो मु गोटे देख पिले जो जिनसटा कहूँ आ गोटे सेंटेंस कौच पिले, सीमा इज स्टेइंग इन Viva's home as a guest, and Viva has to request Seema to do a few things for her, which she is not able to do herself for some reason or the other. Here is an example. देखो पहले हम जो जिनसटा कहूँ माने रिक्वेस्टिंग सम, डूइंग सम अनयूजुअल रिक्वेस्ट्स. तो हम ये कौन करुचे ना, सीमा आ बहुत दिन पर Viva आसे सीमा घर को, एवं सीमा से चाहते कौन ना दुई जन मिसी गपे, ताले केमती हम कम जाल तो पुणी करिया पड़ियो. तेणु ये गोटे काम कले से आ गोटे काम ताको कर देबा पड़छ. माने ही इज अ गेस्ट, सी इज ए गेस्ट, तथापि ताको से काम करिया को बाध्य करछ करिया पाई. तो कौन से तो बसिक तो करबो नै, से गोटे काम कले मु ए कामटा करछ तू से कामटा कर दे. तो एटा कहिला बेले यू शुड ऑलवेज सी दैट द मोर ह्यूमिलेटेड वर्क यू शुड डू. तो ये केते गुड़े सेमती एग्जांपल अच्छे पिले. तो फीड द डॉग, धरा जाओ कुकुरटा तू टे खुए दे, कहया पूर्व तमें ताठू खराब कामटे निजे करके ताकू कहबो. हैला तो यू मस्ट शोइंग ए सॉलिड रीजन टू फॉर्म ए रिक्वेस्ट टू हिम, राइट, और हर. तो देखो पिले, वुड यू माइंड फीडिंग द डॉग. देखो आमे कौन करछे ना फॉर्मल सांगो, तथापि आमे कैन यू कहि पारने, विल यू कहि पारने, because the intensity is more here, right, and there are some derogatory works you will have to do with her. Would you mind, would you mind feeding the dog as
I have to wash the utensils. Hello. Would you mind feeding the dog as I have to wash the utensils? I have to tama sango I have got to be rakhi paribo. This is American way of speaking. I have got to wash the utensils. मते टिके बासन ओडा धोया पड़ियो तू टिके ताऊ खाइयाउ दे दे हैला डॉग टाऊ खाइयाउ दे दे किछि नै प्लेट रे पेडिग्री तयारी कर दलो नै ता पाके थोई दलो ता पाके टिके ठियाले से खाइ दो दैट यू डू. किंतु तुम सांग को कहवा केते दूर प्रযোज्य इट्स योर जॉब यू शुड डू दैट बट बिकॉज he has come she has come for only one day and you do not want to miss her even a second. So what should you do? You both should complete the task of the house and sit together on the bedside. Okay, so these are some of the examples that I have shown you, and rest examples we will make that in the offline class. Thank you.